Hello girls, I'm Dr. Surangna and I welcome you to yet another episode of Women Health Series by Lifestyle Speaks. Today's video is very exciting, interesting and important as I will talk about how we women can be independent or more independent. And this is so important for our mental health and overall well-being. It will also talk about certain things which we women should know but may not know so that we can become more independent. आज जो मैं बात करूंगी वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं बात ये करूंगी कि हम महिलाएं कैसे ज़्यादा आत्मनिर्भर बन सकती हैं जो हमारे विकास के लिए बहुत ज़रूरी है और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है, दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से. We women are very hardworking and are very dedicated in whatever things that we do in our life. But in all this, we sometimes forget our own self. But it is very important that we also focus on ourselves, which is important for our well-being. And it's also very important that we keep our priorities in mind. तो आइए जानते हैं वो सारी चीज़ें जो हम लड़कियों को जानना चाहिए जिससे हम और आत्मनिर्भर बन सकें, क्योंकि आज के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है कि हम लेडीज़ अपने अलावा और किसी पे भी डिपेंड ना हो किसी भी चीज़ के लिए. It is very important that we women be able to do whatever we want to do, live our life to the fullest and be happy at all times. And for that, it is important that we know a few things which we can encourage ourselves to do so that we can be more independent and self-sufficient. So let's get started. तो चलो शुरू करते हैं. The very first thing that we women need to learn to become more independent is to be able to handle whatever situations come in our life, whether they are good or whether they are bad. It is very important that we are able to handle our situations ourselves, and whatever decisions we take to solve a particular situation should solely be our choice, and we should not be dependent on anybody else to solve a problem or to take our decisions. This will make us stronger and less dependent on others, and this is so important for our own growth. हमारी ज़िंदगी में जो भी स्थिति हो, हम लेडीज़ को उसे खुद से मैनेज करना आना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, छोटी हो या बड़ी हो, ये बहुत ज़रूरी है. हमें किसी पे भी आत्मनिर्भर नहीं होना पड़े और इसी से हम ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनेंगे. One thing which is very important that we women should know so that we can handle all situations that come in our life is that we should never be afraid to take any risks, or we should never be afraid of any failure, because we may fail, we may fall down, but we will surely rise again. To become independent, it is also very important that we women never stop learning and we try to become better in whatever we want to become in. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदर की सीखने की भावना को कभी कम ना होने दें और हमेशा हम अपने आप को इनकरेज करें कि हम कुछ नया सीखें. Learning new thing could be anything from studying a new subject or taking an online course or learning to drive a car or learning to fix things. And the easiest and the most cost-efficient way in which you can learn new things easily nowadays is, no prize in guessing, it is YouTube. तो YouTube देखकर आप कुछ भी आसानी से आज के ज़माने में घर बैठे बैठे सीख सकते हैं, फ्रॉम कुकिंग टू लर्निंग हाउ टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट टू लर्निंग हाउ टू डू मेकअप. तो YouTube देखकर आप फ्री में घर बैठे बैठे इजीली बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और इससे अपना ग्रोथ इन्हांस कर सकते हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं. Taking out time to invest on ourselves is also one very important thing that we women can do to become more independent. And it is one of the best investments that we can make on ourselves for our own well-being and good health. And this can include incorporating many good habits in our daily routine, such as regular exercising, eating nutritious foods, or taking out time for our own personal care, meeting our needs, or for our own personal grooming. तो अपने आप के लिए टाइम निकालना और अपने आप पे टाइम इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है और इसमें आप अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं जो आपको आपके ग्रोथ को इन्हांस करेगा, आपकी पर्सनालिटी को इन्हांस करेगा, आपके वेल बीइंग को इन्हांस करेगा. और ये बहुत ज़रूरी है जिससे हम लेडीज़ थोड़ा और ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो सकें. Doing this will help us to become more confident and develop a very bold personality which will make us independent and self-sufficient. We women generally have the habit, or we generally tend to take other people's advice or opinion about something we want to know. Maybe we are in some problem or situation and we tend to go to other people for taking their advice on how they dealt with that situation.
जैसे कि आपने ऐसा क्या किया कि आपका ये बेटर हो गया, या आपने सिचुएशन को कैसे डील किया, या आपको ऐसी प्रॉब्लम हुई तो आपने क्या किया. देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट, बट आई पर्सनली फील दैट वी शुड बी एबल टू डू आवर ओन रिसर्च एंड वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड आवर थिंग्स ऑन आवर ओन फर्स्ट, rather than always depending on somebody else for their advice or opinion. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें खुद से अपनी चीज़ें अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, खुद से अपना रिसर्च करना आना चाहिए, जैसे हम जान सके कि अच्छा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इससे पहले कि हम किसी और से एडवाइस या ओपिनियन लें. Whenever you're stuck in any situation or any problem, there is no harm in taking anybody's advice or opinion, but at first you should always do your own research so that you can become more independent and you're more confident of all the actions you take in your life. To be more independent, it has become very important that we women are able to express our feelings and speak out our mind, especially when it is needed. And by this, I don't mean that saying anything without thinking or speaking unnecessarily or speaking whenever it is not required or just saying anything. But ये बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरत के समय हम अपने फीलिंग्स दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर सकें, हम दूसरे के सामने अपनी बात रख सकें, जो बहुत ज़रूरी है और ये हमें ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाएगा और हमारे कॉन्फिडेंस लेवल्स को भी बढ़ाएगा. Doing this will increase our confidence levels and it will help us move towards our independence. Long gone are those days when women were kept away from taking financial decisions at their home or handling their own finances. In the current time, it is very important that we women are able to handle our own money and we are also able to take all financial decisions at our home so that we are more independent. तो इंडिपेंडेंट होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में कि हम लेडीज़ अपने मनी, अपने फाइनेंसेस खुद हैंडल करें, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद लें. और साथ ही साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम समय निकाल कर अपने आप को ये सिखाएं कि मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सेविंग्स कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं, क्योंकि ये सब भी बहुत ज़रूरी है. So it is very important that we women educate ourselves about money management, savings and investment, and it's also very important that we set financial goals for ourselves and we're also involved in the day-to-day management of our home finances and our personal finances for us to be more independent. Self-reflection is very important, and to be truly independent, it is very important that at time to time we honestly assess ourselves, to understand ourselves and to identify our strengths and shortcomings. Because let's accept the fact nobody is perfect. तो आत्म प्रतिबिंब बहुत ज़रूरी है हम लेडीज़ को ट्रूली इंडिपेंडेंट होने के लिए, जिसमें हम थोड़ा समय निकाल कर हम अपने आप को एसेस कर सके कि हमारी क्या अच्छाइयाँ हैं, हमारी क्या कमियाँ हैं, और ये बहुत ज़रूरी है. तो इससे हमें अपने बारे में पता चलेगा, हमारी क्या नीड्स है, हमें इसके बारे में ये पता चलेगा, हमें ये भी पता चलेगा कि हमें क्या करना है. तो इससे हमें क्या होगा, हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा और हम ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनेंगे. So this will help us to truly understand ourselves, our needs and wants, what we want to do or achieve in our life, and this will give us the confidence to become more independent and self-sufficient. Self-motivation is the ability to find strength and inspiration at all times to achieve something in our life without being affected by any situation. And it is very important that we women always self-motivate ourselves every day to achieve whatever we want to in our life without being affected by any situation. This will not only help us to become more independent, but it will give us immense strength and passion. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लेडीज़ हर दिन अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकें. हम ये वेट ना करें कि कोई हमें और आकर मोटिवेट करे, पर हमें खुद से अपने आप को मोटिवेट करना आना चाहिए, जिससे चाहे कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में अच्छी या बुरी, हम जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं हम वो कर सकें खुशी खुशी. Especially in a world where women are not motivated much and are put a lot of pressure upon, it is very important that we are able to self-motivate ourselves so that we can become more independent. So these are some of the things which we women can adopt in our life to become more independent. ये कुछ बातें मैंने की थी जिसको आप अपने लाइफ में अडॉप्ट करके ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन सकते. So that's it for today. आज के लिए इतना ही. Stay healthy, stay happy, and thank you so much for being a part of this healthy journey. If you're still not subscribed to my channel, hit the subscribe button and press the bell icon in the end to get all latest updates from Lifestyle Speaks. Don't forget to share this video more and more with your friends and family. इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा.
love your life and make it charismatic. See you again next time. Stay safe, stay connected, and keep watching Lifestyle Speaks.